हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज चैप्टर 5 क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम वी आर डूइंग. Okay, chapter 1, 2, 3, 4 has been done. Now today some questions in the last lecture chapter 5 also done. Now today lecture number 7 on this continuous of the chapter 5 important questions on the basis of the board exam 2025. Important expected questions from that similar type of questions may ask in the exam, so you be careful about this. Okay, now question number 1 today from chapter 5 is in an AP given A equal to 8, AN 62, SN 210. SN means sum of n term, AN means nth term. So here SN formula also we know. SN formula n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d bracket closed, or short formula if last term is given L, if L is given then n by 2 into a plus L. L is called the AN. AN means last term, L last term. So we can use here both formula. AN formula we know. AN is equal to AN formula we know. I told in the lecture number 6, nth term A plus n minus 1 into D. Okay, A plus n minus 1 into D. This we know. Okay, and other formula here Sn we know. Sn, because last term is given, so Sn is equal to this formula, n by 2 into a plus L. A plus L. L means the nth term, An. Okay beta, this formula. Now use here both. An, nth term 62 here is equal to A is given 8, A plus n minus 1, n minus 1 into D. Okay, this. Similarly this we can solve. Sn given 210 Sn, and this 2 will come multiply this side into 2 is equal to n. We have to find A given here 8, A plus here An 62, A plus An. An is given 62. We can put here. Okay, then this will be equal, n equal, simplify, n will be equal to 62 plus 8, 70. 70 will come in divide, so 210 into 2 upon 70. Okay beta, 70 will come in divide from that side. Okay, now after this n value will come, simplify, 7 3s are 21, and then 3 2s are 6. So n is 6 here. After that you can put n here, then 62 minus 8, 62 minus 8, हाँ जी 54, ठीक है बेटा,
plus 8 this side minus 8 is equal to n minus 1 into d. Okay, use here n from first we can put here, use 1. Okay, what is n? N is 6, so put here 6. So 54 is equal to 6 minus 1, then 5 d. Then d is equal to 54 divided by 5. Okay, this is common difference d. So now both answer here saying calculate. Okay, a given 8, find n and d. Done. So like this we can use equations. Okay, this is one question important. Other is next question. Okay, yes, question 2 continue. How many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be given to give a sum 636? So how many terms? N we have to find. If sum is given 636, so according to question, solution, ठीक है बेटा, in the solution according to question sum of let n term is 636. Sn formula n by 2. Okay बेटा, 2a formula plus n minus 1 into d, common difference. This is equal to 636 given. Okay, now put the values of a and d. Okay, find n. So n, this 2 will go and multiply that side. A is 19, 19 to the 18, 9 to the 18 plus n minus 1 into d. D is 8 into 8 is equal to 2 multiply 636. 2 6 are 12, 2 3 are 6, 1 7, 2 6 are 12. 1272. Then simplify. Okay beta, then it is 18n and multiply inside 18n and multiply plus 8n. Okay beta, 8n into n, so 8n square and minus 8 into n, minus 8n. Okay, is minus 1272. Taken this side is equal to 0. Simplify, it is the quadratic equation in the n variable. ठीक है, तो 8 here, 2 common, 4 not common here. So 2 we can check here, 18n minus 8n, then 10n. So 2 common and then 4n square
सिंप्लीफाई किया एंड 18 माइनस 8 10 डिवाइड बाई 2 देन 5 देन प्लस 5n एंड माइनस डिवाइड बाई 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 this is equal to 0 then quadratic simplest for middle term splitting कर लें ओके 4 इंटू 6 3 6 एंड डिफरेंस 5 चाहिए ठीक है बेटा तो 4 इंटू 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 देन 23 4 5 जा 20 36 4 9 जा 36 ओके हमें डिफरेंस चाहिए 5 का ठीक है बेटा देन अब इसको और कर लें 4 इंटू 4 फैक्टर किए ठीक है बेटा इंटू ये किससे डिवाइड है 3 से नहीं है 3 से है सम 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9 इंटू 3 ओके तो 4 इंटू 4 16 16 इंटू 3 48 इंटू 53 देन डिफरेंस बोथ 5 तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो पॉजिटिव ग्रेटर वन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव देन सम ऑफ बोथ इज +5 एंड प्रोडक्ट इज माइनस दिस ठीक है ओके नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म देन 4n स्क्वायर प्लस 53 and minus 48 53n minus 48n and minus 636 is equal to 0 okay then simplify taken common here what is common here only n common then 4n plus 53 ठीक है and then minus common and 12 common minus 12 common then positive 4n एंड दिस माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है ठीक है 12 से डिवाइड किया 12 5 जा 60 एंड 36 12 3 जा 36 is equal to 0 okay now next 2 factor 4n plus 53 and other factor is n minus 12 is equal to 0 so this मेक इक्वल टू 0 तो दिस 0 तो n इज इक्वल टू माइनस तो यहाँ से क्या बनता है n इक्वल टू माइनस 53/4 रिजेक्टेड एंड यहाँ से n इक्वल टू 12 ये रिजेक्ट क्यों हुआ क्योंकि n मस्ट बी द नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से So this is rejected and is the counting natural number. So 12. Answer is 12. So means how many terms? 12 terms. 12 term answer.
12 टर्म्स आंसर। ठीक है, डन। तो लाइक दिस वी कैन डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, continuous question 3. If nth term of an AP is an equal to 9 minus 5n given, find AP and 10th term। तो AP फाइंड करने के लिए nth टर्म गिवन है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने इसमें सॉल्यूशन में। इफ n इज इक्वल टू 1, इफ, ओके बेटा, तो if n is equal to 1 then a1 first term is equal to 9 minus 5 into 1, 5, n is equal to 1, तो 9 minus 5 4, फर्स्ट टर्म आ गई। n इक्वल टू 2 अगर पुट करें सेकेंड टर्म, ओके बेटा, तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड टर्म a2 will be equal to n is 2, तो 9 minus 5 2 जा 10, that is minus 1। Similarly थर्ड टर्म n is equal to 3 पुट किया, n is equal to 3 means a3 थर्ड टर्म is equal to 9 minus 5n, n is 3, तो 5 3 जा 15, 9 minus 15 6, ओके, ठीक है, क्लियर। तो देन एंड सो ऑन, तो वी कैन से दिस एम्प्लाइज AP बन गई आपकी, क्या AP बन गई, AP such that first term is 4, comma second term minus 1, okay, and minus 6, okay, then minus 6 and so on। तो we can find 10th term, तो A10 is equal to A is first term 4, A plus n minus 1 means 9, D, put here D, okay, then this implies 4 plus D, D is minus 1 minus 4 minus 5, D is minus 5, तो 9 into minus 5, 9 into minus 5 45, तो 4 minus 45, 4 minus 45 मीन्स 4 निकल गया इसमें से 41 minus 41, ओके, डन। सो आंसर this answer and this is AP, done। तो like this question, easy to do। Now next question number 4, if Sn sum of n term given of an AP, sum of n term of an AP 4n minus n square, find an and that AP, okay, sum given of n term of AP। तो then solution, if n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो S1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 देन S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म मीन्स दैट इज A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा, एंड दैट 1 पुट किया तो 4 into 1 4 minus 1 square is 1, then 3। नाउ n पुट किया 2, सिमिलरली n इक्वल टू 2, देन S2, n की वैल्यू 2 पुट किया, S2 4 into 2 8 minus
2 square 4, 8 minus 4 4, S2, S3 n इक्वल टू 3 पुट किया तो S3 आ गया। ओके बेटा, S3 इज इक्वल टू 3 पुट किया, 3 4 जा 12 माइनस 3 स्क्वायर 9, देन 12 minus 9 3, like this we can find now first term आपकी आ गई A, now second term we can find second term होगा sum of two term minus S1, S2 minus S1. This formula, general formula, you remember kth term, any natural number k, kth term is equal to sk sum of k term minus sum of k minus 1, एक कम टर्म उससे, ठीक है, यहाँ 2 1, तो देन A2 विल कम, तो A2 विल बी इक्वल टू S2 योर 4 माइनस S1 इज योर 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म सिमिलरली थर्ड टर्म A3 will be equal to by this formula S3 minus S2। ओके, तो S3 कितना है यहाँ, S3 हमने कैलकुलेट किया है 3 है, माइनस S2 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, तो these three term, okay, so AP, so required AP such that first term 3, second term A2 1, third term -1 and so on. This is AP answer, and nth term we have to find, तो nth term an will be equal to Sn minus Sn minus 1. This formula we have to use. Sn is given 4n minus n square, तो 4n minus n स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट Sn माइनस 1, तो n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट किया, सम ऑफ n टर्म में n के प्लेस पर n माइनस 1, देन सम ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1, तो 4 इंटू n माइनस 1, तो 4n माइनस 4, ओके, माइनस n स्क्वेयर, n इज n minus 1, n minus 1 whole square. Be careful, simplify, then 4n, this implies 4n minus n square and sign change, okay, तो 4n जो है माइनस का हो जाएगा, माइनस 4n, change each term sign and minus minus plus 4, okay, and then minus minus plus, and then n minus 1 whole square, n square plus 1 and minus 2ab 2n whole square formula, and simplify, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4n, तो ओनली 5 minus 2n, so this is 5 minus 2n, so this is the nth term of this AP,
डन. सो लाइक दिस आंसर. ठीक है, वी कैन डू. नाउ वन क्वेश्चन मोर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस. इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 12, फर्स्ट 3 टर्म का सम, एंड देयर प्रोडक्ट इज 32, फाइंड दैट 3 टर्म्स. तो फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट दैट 3 टर्म्स A minus D, first term, comma, second term A, third term A plus D. Okay, let these 3 terms. Okay, let this comma this are in AP. So sum of these A minus D plus A plus A plus D, sum of these 3 terms is equal to 12 according to question given. According to question. ठीक है. नाउ माइनस D प्लस D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 12, देन A इज इक्वल टू 3 4 जा 12, तो A इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ इफ A 4, देन प्रोडक्ट सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट इज 32. तो प्रोडक्ट मीन्स A minus D into A into A plus D, all 3 numbers multiplication product is given 32. Then A minus D, A plus D, then A square minus B square, A plus B, A minus B फार्मूला. तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 32. पुट हेयर A is 4 here from the first. Put this A 4, then 4 into 4 square 16 minus D square is equal to 32. Then divide by 4, then 16 minus D square is equal to 4 8 जा 32. ओके, ठीक है. एंड देन वी कैन से दिस D स्क्वायर उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो गया, और ये 16 माइनस 8 8. देन D इज इक्वल टू, वी कैन से प्लस माइनस 2√2. ओके, तो D वैल्यू दिस. सो नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स, सो रिक्वायर्ड नंबर्स और 3 टर्म A minus D, comma A, comma A plus D. Then A minus D 4, 4 minus 2√2, 4 minus 2√2 first. Second A is 4. Third number A plus D 4 plus 2√2. Or if A is minus 2√2, then minus minus plus 2√2, and A is 4, 4, this 4 minus
2√2 आंसर। ये 3 नंबर बनेंगे। ठीक है बेटा, डन। तो लाइक दिस क्वेश्चन यू कैन डू। Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Thank you.